Dear students, very good morning. Today we are going to discuss a very important question, Wheatstone bridge and proof of Wheatstone bridge by using Kirchhoff's law. So dear students, let us start Wheatstone bridge. This is the diagram for the Wheatstone bridge. It consists of four resistances. P, Q, R, X arranged in the form of the quadrilateral. You can see from here four resistances P, Q, R, X arranged in the form of the quadrilaterals. Firstly, before discussing the Wheatstone bridge, what is the utility of the Wheatstone bridge? Wheatstone bridge is used to find out the value of the unknown resistance. किस पर्पस से यूज किया जाता है? To find the value of unknown resistance. So from figure we see that between points A and B, resistance P is connected. Between points B and C, resistance Q is connected. Between points A and D, resistance R is connected. And between point D and C, resistance X is connected. And between the point A and C, this is point A and this is point C. Between the point A and C, a battery having enough E and a key K2 are connected. And between points B and D, a tapping key K1, and galvanometer G are connected. And suppose that here point B is at a higher potential than the point D, and current I3 flows through here. This is I3. Clear? So you can see from here, from figure, four resistances P, Q, R and X are connected across the four arm of the Wheatstone bridge. P, Q, R, X किसमें कनेक्टेड है? फोर आर्म्स में. दिख रहा है आपको? ओके. A tapping key K1 and galvanometer G are connected between points P and D. Tapping key K1, galvanometer G are connected between points B and D. There is a battery of EMF E and a key K2 are connected between points A and C. You will see from here, this is point A, this is point C. इसके और इसके बीच में क्या जुड़ा है? A battery having EMF E and a key K2 are connected. The value of resistance R is adjusted so that on putting plug in key K2 and pressing the key K1, the galvanometer shows no deflection. ये जो बेटा आपके पास रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमें इस हिसाब से एडजस्ट करनी है कि जब भी टैपिंग की को हम से प्रेस करेंगे, गैल्वेनोमीटर जो है कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा. और गैल्वेनोमीटर हमारा डिफ्लेक्शन उस केस में शो नहीं करेगा जब पॉइंट बी और डी होते हैं, दे मस्ट बी पोजेस्ड एट द सेम पोटेंशियल, एंड व्हेनेवर दे पोजेस्ड एट द सेम पोटेंशियल, नो करंट विल बी फ्लो थ्रू दिस आर्म. ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले हम ये सपोज करते हैं कि पॉइंट बी इज एट द हायर पोटेंशियल देन एट द पॉइंट डी एंड द करंट I3 फ्लो थ्रू दिस आर्म. लेकिन करंट बेटा कौन सी कंडीशन में फ्लो करेगा? इफ वी सपोज दैट पॉइंट बी इज एट हायर पोटेंशियल देन एट द पॉइंट डी. But if point B and point D are taken at the same potential, then no current will flow through this arm. We will discuss it later. Let us see. The value of resistance R is adjusted so that on putting plug in key K2 and pressing the key K1, the galvanometer shows no deflection. Then the bridge is said to be balanced. For a balanced Wheatstone bridge, P by Q is equal to R by X. ये कंडीशन जो है, these are the balancing condition for the Wheatstone bridge. कौन सी वाली है? P by Q is equal to R by X. अब बेटा हमें इसका प्रूफ करना है. We have to prove this condition. So dear students, let us see the proof. Now from the figure we see that now whenever we put the plug in this key, current I start flowing in the electrical circuit, and at the point A, current I1 flow through the arm P. Then the current, whenever we put the plug in this key K2, circuit got completed and current start flowing, current I start flowing, and at the point A, current get distributed
current I1 flows through the resistance P and current I2 flows through the resistance R. Now we suppose that if point B is at higher potential than at the point D, so current I3 flows through the galvanometer. करंट I1 I2 यहां से फ्लो कर गया, क्या बच गया I1 माइनस I3. करंट I1 माइनस I3 फ्लो होगा रेजिस्टेंस Q and current here I2 from here I3 and I2 plus I3 flow over the resistance X. Clear है बेटे? So let us see. When the plug is inserted in the key K2, जब भी इस की में आप प्लग को इंसर्ट करेंगे, the current I enter the network at the point A. ये जो आपके पास I है, ये करंट आपने यहाँ पे लिखो आप इसको I start flowing here. Let I1 is the current through the resistance P. I1 is the flow कर रहा है through the resistance P. I2 is the current flowing through the resistance R. You can see from here. I2 is the current flow through the resistance R. अभी मैंने क्या कहा? If we suppose that point B is at higher potential than the point D, the current I3 flows through the galvanometer G. You can see from here. Now if we suppose that point B is at higher potential than point D, then I3 the current flow through the galvanometer G. So अब बेटा यहाँ से करंट I1 जा रहा है, I3 आपका यहाँ से हो गया, कितना करंट बच गया I1 माइनस I3 करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस Q. You can see from here. करंट I1 माइनस I3 करंट फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस Q. Similarly यहाँ से करंट I2 आया, यहाँ से I3 आया. I2 plus I3 is the current flow through the resistance X. You can see from here. At the point C net current. अब C point पे जो current आएगा net वो क्या आएगा? यहाँ से क्या आया? I1 minus I3. यहाँ से क्या आया? I2 plus I3. So at point C net current क्या आ गया? यहाँ पे I1 minus I3 plus यहाँ से कौन सा आ गया? I2 plus I3. ये बेटा कैंसल. और I1 plus I2 is equal है I is equal. तो at point C net current I1 plus I2 is equal to I flows from point C to the negative pole of the battery. यहाँ से होगा negative pole of the battery. कितना करंट equals to I. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? Okay. Now from the figure. Now if we suppose that from figure we see that we take the convention that current flowing in clockwise direction is taken as positive. From figure we take the convention that current flowing in clockwise direction is taken as a positive. क्लियर है? जो भी क्लॉकवाइज में हमने करंट की डायरेक्शन है वो कितनी बेटे पॉजिटिव. So in the loop A B B A, so from the loop A B B A, क्लियर? तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ से A B D A, A B I1 P क्योंकि क्लॉकवाइज वाला में पॉजिटिव I1 P plus I3 G plus I3 G minus I2 R is equal to 0. This is
I1P plus I3G minus I2R is equal to 0. This is number 1. Similarly, in the loop BCDB, in the loop BCDB, similarly in the loop BCDB, in the loop BCDB क्या मिल जाएगा आपके पास यहां से I1 minus I3Q, I1 minus I3Q. अब बेटा ये देखो, ये तो क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है. माइनस I2 प्लस I3, माइनस I2 प्लस I3 x, ये दिया आपका किसमें एंटी क्लॉकवाइज. माइनस I3G is equal to 0. इस इक्वेशन नंबर 2. क्लियर है. पहले वाला देखें, A B D A, I1P plus I3G minus I2R is equal to 0. क्लियर. In the loop BCDB, I1 minus I3Q, ये एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव, I2 plus I3X minus I3G आपके पास ये आ गया is equal to 0. दिस इज नंबर सेकंड. करें बेटा इसको सिंप्लीफाई. तो बेटा ये दो इक्वेशन हमारे पास यहां पे बन चुकी हैं. किसके लिए? इन द लूप ABDA, इसके लिए आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई. एंड इन द लूप BCDB, इसके लिए आपके पास ये वाली इक्वेशन हमसे आ चुकी है. क्लियर है. ये 0 क्यों लिया है हमने? क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0. According to Kirchhoff's second law, algebraic sum of all the voltages in closed electric circuit is always 0. Okay. तो बेटा ये दो इक्वेशन आपके पास बन चुकी हैं. क्लियर है. Okay. Now if we suppose that you can say the value of resistance R is registered the value of resistance R is registered in such a way that point B and D are at same potential. Point B and D are at same potential. The value of resistance R is registered in such a way that the point B and D are at same potential. That is, no current will flow in R. पॉइंट बी एंड डी आर सेम पोटेंशियल. जब पॉइंट बी और डी सेम पोटेंशियल के ऊपर होंगे, नो करंट विल फ्लो इन द आर्म बी डी. दैट इज करंट फ्लो galvanometer. Current flow galvanometer is 0. That is I3 is equal to 0. In the value of resistance R is registered in such a way that point P and D are at same potential. That is, no current will flow in the RMPD. That is, current flow galvanometer is 0. I3 is equal to 0. Now putting I3 is equal to 0 in equation 1 and 2. Clear? Putting I3 is equal to 0 in equation 1 and 2. क्या हो जाएगा? Putting I3 is equal to 0 in equation 1, we get
इक्वेशन 1 में I3 की वैल्यू 0 पुट करें, क्या बन जाएगा बेटे? I1P 0 into G minus I2R is equal to 0 एंड यहां से आपके पास क्या जाएगा? I1P minus I2R is equal to 0. This implies I1P is equal to I2R. This equation number third. इक्वेशन नंबर आपके पास कौन सी आ गई? थर्ड. क्लियर है? सिमिलरली इन लूप इसीलिए ये आपके पास आ गया यहां से, तो फ्रॉम सेकंड इसमें भी फ्रॉम टू पुटिंग I3 is equal to 0, फ्रॉम टू पुटिंग I3 is equal to 0, क्या बन जाएगा बेटा यहाँ से? I1 minus 0 into Q minus I2 plus 0 into X minus 0 into G is equal to 0. क्या करें बेटा? I1 minus 0 into Q minus I2 plus 0 into X minus 0 into G is equal to 0. तो क्या बन जाएगा ये? I1Q minus I2X is equal to 0. तो आपके पास क्या बन गया बेटे? I1Q is equal to I2X. This equation number 4. ये आपके पास 4 आ गई. Dividing 3 by 4. Dividing equation 3 by 4. Dividing equation 3 by 4. We get this equation number third, this equation number 4, इसको डिवाइड करने का क्या बन जाएगा? I1P upon I1Q is equal to I2R upon I2X. I1P upon I1Q is equal to I2R upon I2X. ये इसको कट कर दिया आपने यहां से, ये कट कर दिया, तो आपके पास क्या गया? P by Q is equal to R by X. And these are the balancing conditions for the speed on bridge. The value of these two resistances P and Q are known, and these are known as the ratio arm. R is the variable resistance, and the X is the resistance whose value you have to find out. तो अगर ये तीन वैल्यू हमें पता है, ये X की वैल्यू हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा. तो स्टूडेंट्स, आई होप ये बीट्स फ्रॉम ब्रिज और इसकी बैलेंसिंग कंडीशन जो है ये बेटा आपको समझ आ गई होगी. So okay dear students, thank you, have a nice day.